now we have, now I would like to invite Ms. Roshan Khurshid Barucha for her welcoming remarks. Over to you, ma'am. I'm Roshan Khurshid Barucha, and let me give you my little background. I'm from Balochistan, and this topic which is given to me is very dear to my heart because I am more of a social worker, and I work with orphan children and all. And in a lot of NGOs, I'm there working with them. So when I was given this as a chair, I was very happy because like I told you, it is very close to my heart. And when I look at things in Pakistan, I'm going to hear from everyone, of course, where do we stand today and are we going according to what the government has said and what help we are getting from government? Because when we look at the poor people, and if they don't get their basic needs, what their basic need is, food, education, health, these are the basic needs which has to be given to every individual, and I think it is their right. Because when we talk of SDGs and when we say no poverty and no hunger and quality education, and when we are talking of health and everything, we also say that health, we have health facilities, but I don't think, because I will talk from my heart. What is the fact in life, I will tell. Because I would not like to hide anything under the carpet and just give flowery reports to you all, everything is very good and everybody is getting very good salary. I don't think so. The government has given basic salary like 37,000, round about 40,000, and that every individual who is working in government should get it. But at the same time, when we see the price rising day by day, if you see towards wheat or rice, anything basic, I will talk of basic. If you see wheat, sugar, jo daily wages ka hai, when you see Chaki Patti, how things are going up. And we have got very good speakers from Unilever and Nestle. They will tell us more because the prices are being raised there. So they will be a good, and they can tell us, do we think in that 40,000 what the government has fixed the rate, can our poor people live? How are we going to? We cannot leave everything on the government. I do agree that government has got many programs like this program, Benazir support program is there to help the poor of the poorest. Then we have this Prime Minister Youth Program for the youth sitting over here. I don't know how many are benefiting by that program. So that is also when question and answer comes, we'll come to know by them also okay, how many are benefiting by that. Then we have this SRS program. We have a lot of program. But after all that program, even I see still poverty is there. And let me tell you today's story in the morning, which really hurt me a lot. We got an accommodation in Movenpick. And so at the breakfast time, I was there. And that chap, wo kisi ka nashta bana raha tha, he's baking the egg, putting the zardi in the dustbin. So I'm looking at it. I said, ye kyun? So he's saying, वो जर्दी नहीं खाते. मैंने कहा लोगों को खाना नहीं मिलता है. तो he told me कि whatever the food is left, we are supposed to throw it away. It was such a hard pinching for me, running a SOS village, जहाँ यतीम बच्चों को खाने के लिए we have to run from door to door. And when we see waste of food, so here we are talking of living wages. There we are talking of wastage of food. So now we will hear from the speakers, how can we go about, what are the changes, what are the recommendation, what is the policy the government should adopt. I feel there should be a commission for that in all the provinces. What we notice I notice that every province has their own pay scale, which is, again, I don't think it's a right. So how it can be worked out only when we have government, employer and employees together, if we work in triangle and we come to one sort of solution, then only we can go forward with things. In our own, if we keep on
in our own we do it, that doesn't work out, that doesn't come out with it. So we have to look at the poor, because people in our country, poor people are becoming poor of the poorest. Elite are becoming richer, poor are becoming poorer. So there is a time, I would say there are middle class people even, whom we call it white collar, but they are also suffering with the things going up. So we have to look at how can we help. Everybody should be very frank enough to ask questions so that we can come out with some very good recommendation that how can we go forward. At least our heart will be happy कि हमने अपने viewpoint दे दी, whether it is implemented or not, but we have to be satisfied कि our recommendation were put up, and then see what happens. Especially, I would like the youth to come up with good questions and ask. So let's see how we go along as we go along. Thank you very much. And we would like the speaker, the panelists, and I also welcome the one who is on the Zoom. We also welcome you if anybody is there on Zoom. I was told that one of the speakers on Zoom, so we welcome you too. Thank you very much, ma'am, for giving and your insightful suggestion about the living wage and highlighting that there is inflation that increase the cost of living in in Pakistan, across every region. Now I would like to invite. Now we have a technical presentation from Unilever International, which is by Matteo Square, who is the Global Sustainability Manager, Livelihood and Human Rights at Unilever International. Please. Ji, presentation. जी वो वीडियो प्ले कर दे. Ibrahim, video. Hi, my name is Matteo Squire. I'm a Global Sustainability Manager at Unilever, and I look after our work on living wages in our supply chain from an advocacy and partnerships perspective. I will get more into detail on living wages, what it is, and give a little bit more of a global perspective on the challenges that we face, as well as why we need to work together to and how we need to work together to address those challenges. I want to first start with looking at the overall context. If we look at the number of workers and the scale of the issue of living wages, we see that about 1 billion people are still in working poverty, meaning they have a job and they work 40 hours or they work a full week, but they still do not earn enough to afford a decent standard of living. So when we're talking about living wages, what we really mean is for people to be able to work and afford a decent standard of living for themselves and their family. And what that means is essentially being able to afford clothing, food, education, healthcare, and also having some savings on the side for any emergencies. If we look within countries, often there's a confusion in terms of the difference between minimum wage and living wage. Looking at this map here that's provided by Wage Indicator, we can see some of the major differences in minimum wage against the living wage. You see, for example, in many countries in Africa, the gap between the two is very large. Latin America as well, in parts of Asia, we see that. And Pakistan is one of those countries where that is also true. There is a gap between the minimum wage and what people need to afford to get by every day. Looking at what Unilever has done to date, I think a few things to mention. First, we started our journey in 2014 on living wage. We started in our own operations. We found that about 12,000 of our employees, 8% of our workforce, was below a living wage. And it took us 6 years to get to the point where our employees were paid a living wage. So in 2020, we achieved that, and we've maintained it every year since then. In 2021, we expanded our commitment towards our supply chain.
with a goal that by 2026, suppliers representing 50% of our spend will have signed the living wage promise. I wanted to talk a little bit about, why it is that we're doing this as well. I think there's a few things. Of course, there's a moral imperative. I think there's many links to human rights. It enables children to go to school, so you avoid child labor. But also there is a business case. We see, for example, that there is increased worker productivity, reduced worker turnover, people are happier, they stay in their jobs. We also see that it has an impact in our value chains. It creates more resilient supply chains. We avoid conflict, for example. And it grows consumer markets, so people can afford our products, for example, more because they are able to thrive. Business depends on communities thriving as well. So there is really clearly a business case there as well, and we see an economic opportunity as well. There's $4.5 trillion GDP opportunity if we were to close living wage gaps globally. In terms of our footprint, and where we are to date, we've achieved 100% of our dedicated collaborative manufacturers now have a contractual requirement to pay a living wage. And about 40% of our spend have now signed our living wage promise. In terms of implementation, looking at our, we are asking our suppliers to sign the promise. What is the promise? The promise is essentially asking our suppliers to join us on this journey, evaluate the living wage gap for their workers in their own operations, identify, how to get started and really set a plan to address those gaps, and then report on progress. And we have many tools and resources available to suppliers. We've done a lot of capability building for our suppliers, explaining to them the difference between minimum wage, living wage, how to calculate it, what tools and resources are available there as well. For example, we funded Wage Indicator, which provides living wage estimates for regions across the world, 3,000 regions. It's now publicly available because Unilever, L'Oreal, and 10 or so other companies have funded them to go public. So really, we're trying to, invest and support our suppliers to make it easy for them to drive this forward in their own operations as well. Now, as I said in the beginning, advocacy plays such an important role, right? This is not something that Unilever can do by themselves. So there's a few key areas that we focus on to bring others with us on board as well, so that we can get other companies demanding this in their supply chains as well. The first is on accelerating awareness, commitment, and action. So we work a lot in multi-stakeholder platforms such as the UN Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, AIM Progress, and others to, again, try and identify and address barriers that businesses face to get started on this. We've invested, as I said, in the tools and resources, so building and promoting the enabling infrastructure, so that's data. But also we have pushed for the International Labour Organization to provide a global definition of living wage. So that's something that has come out at the beginning of last year. Now they are working actively with governments to improve minimum wages so that it reflects more the cost of living. And the third is that we are driving this in key markets as well, such as Pakistan. And the reason that we do all of these things is that if we were to do this by ourselves, it would put us at a competitive disadvantage, but also our suppliers, right? They would say, well, if I was to pay a living wage, but my buyers aren't going to pay, or take a fair share of the responsibility for that, then that prices them out of the market, right? So we need to bring this movement on living wages. And we've seen quite a few major changes happening in the landscape as well. For example, right now I am in Doha, where a political declaration has just been adopted by UN member states, where living wages is highlighted as a key priority focus area to advance social development by all UN member states, so 180 plus governments. And now governments will have to kind of act on that commitment to living wages.
In the case of Pakistan, we did some work both in the Philippines and Pakistan, which aimed to explore a bit more what the business case really is for employees, employers, and the economy. We did 2 impact studies, one with EY in the Philippines and one with 60 decibels in Pakistan. In the Philippines, we were really looking at modeling what would be the potential benefits from closing living wage gaps in manufacturing. We found, in terms of the issue, 72 to 95% of employees were below a living wage in our supplier, with a gap of about 20%. And so, really big gap in terms of how far they are on living wage. But in terms of the benefits, the employer side benefits, we saw that there was potential for 6.6% increase in productivity and 21% reduced employee turnover, as well as 4% savings from recruitment, training, and onboarding expenses. And finally, from an economic perspective, looking at the 3 macroeconomic indicators assessed, so the benefit cost ratio, economic net present value, and the economic internal rate of return, all showed that it would be beneficial to the economy if we were to close living wage gaps in the country across. For the private sector to easily adopt it, and economic case for the policy overall to take this forward. Okay, so so the main agenda is that implementation of living wage will result in firm productivity, and that will eventually result in economic growth. So this is the basic theme of the presentation that I will be giving.
Okay, ji. So, just looking at the definition of living wage, I think I don't need to repeat it. It was already in the previous presentation as well. Uh, we have to consider the decent standard of living. This is the basic concept, and then it has to be location specific. The decent standard of living in Islamabad might be different from Quetta, from Karachi, from Peshawar. So this is a very location specific thing. And again, based on the job titles and the job requirements, then they can have different needs as well. Uh, we already have a methodology that has been employed in Pakistan as well, which is called the Anchor GLWC methodology. Two studies have already been conducted, one in Sialkot and the other one in Khyber Pakhtunkhwa. And we will be giving you an analysis of the results and categorizing Pakistan into that orange zone was also based on that methodology. So we come up with around a 30 to 70% difference between the minimum wage and the living wage for different areas of Pakistan. For in terms of the business rationale, and this is all based on literature. It should be considered as an investment in human capital rather than an expense. It has to be looked in from an efficiency lens. And the evidence suggests that having fair wages or living wage will result in lower turnover, high morale, and improved quality of goods. And all of this will translate into your increasing profitability that will not actually affect your profitability in a negative way. Uh, Next slide. Okay. So if we look at the international context, we have a global consensus by ILO where the landmark, there was a tripartite agreement. Government, employers, and workers should establish a formal definition and principles for living wage, and they should be helping it move forward for mainstreaming the policy objectives. If we talk about EU and UK, there is significant increase in retention and work quality gains. And in the other examples, we can also directly see the productivity gains. But for example, in countries like Pakistan, we don't have direct access to the productivity data. So we always have to sort of analyze productivity through some other indicators. So because we don't have productivity data readily available for these type of countries, we might have to create an indirect causality. But there is a direct evidence that giving living wage will result in an increase in productivity. If we look at the Pakistani context, as I mentioned, we belong to the group where almost where minimum wage and living wage is 30 to 70%. There is a difference. Then we have other constraints like informal labor, which might not be the case with Nestle and Unilever. But for example, I was in Quetta just last week, ma'am, and there I found out we had a meeting with the Workers Federation, and they told us that they found almost 17 bodies in a coal mine after 57 days. So these are the conditions that they are working in, and at a very lower wage. And these are just specifically people from specific areas of Pakistan that are going to different areas and working in mines. So we have to be more holistic. Of course, we have to start from some sectors that I will be describing, that these can be sort of termed as low-hanging fruits, but we have to then go to the vendor industry as it, and these type of non-traditional industries as well. Then, of course, what our priority is that there is a need to we think that the pilots will be better suited for textile because of their export orientation, for FMCG sector because of their variable demand, and then of course other sectors like food processing, retail, healthcare support, and BPO. These are suggested by evidence that these can be used as pilots for living wage. And key enablers again will be a process for wage protection system,
that I think came out as a major recommendation from the study we conducted. It has to be a city-specific benchmark, and then, of course, we have some market leverage in terms of EU, GSP Plus, and CBAM coming in. There might be some indicators that might help the implementation of living wage there. So overall, the goals of the study were to establish evidence-based benchmarks reflecting Pakistan's regional cost of living variations, linking living wage adoption to firm outcomes by measuring its impact on turnover and absenteeism, quality, output per labor hour, and revenue per worker. Estimate local economic impact, including local demand multipliers and tax compliance effects. And of course, we want to the policy pathway that will be a major output of this activity, which we have partnered with Unilever for, will be a policy pathway that will be giving us a national roadmap for implementation of living wage in Pakistan. In terms of methodology, we have conducted multi-stakeholder consultations, 3 multi-stakeholder consultations, one in Islamabad, one in Lahore, and one in Karachi. And there has been a very extensive literature review that we did. And of course, we are in the process of synthesizing and making these causal frameworks that I will be presenting to you. Now, if we talk about the critical success factors, we have divided them into 2 components. One is the more micro firm level, and the second is the enablers, which are the systemic level. The firm level critical success factors include the leadership commitment at the start. It's very important that the overall leadership has to be committed to this agenda. And then we have to have an efficiency wage mechanism. It has to be focused on ensuring that there are significant savings to retaining employees, and the lower turnover eventually will save significant recruitment and training costs going forward. And again, productivity, unfortunately, we don't have a productivity data directly available, so we have to use some proxies to determine productivity, but that again also is one of the factors that we will be considering as a critical success factor, that there is a direct linkage with productivity, both in terms of reduction in cost and in terms of increase in revenue. On the systemic level, the first is the transparent and bank payroll, the wage protection system that is, I think, fundamental for labor rights in any way, irrespective of living wage or any other way. We have, because the minimum wage is also not being implemented. It's a very weak implementation regime, and I think we have one labor inspector per I think 150,000 laborers. So that is not a very efficient enforcement mechanism that we have, and we might be of going. We should be thinking of going for the carrot instead of the stick. So that way, the private sector will be coming to the regulator rather than the regulator going to the private sector. So that is also one of our recommendations going forward. Then phased and specific benchmarks, we have to start with the priority sectors, as I mentioned before. And then, of course, we will be going to other sectors. As I mentioned, there are conditions of labor in some sectors is almost it is worst. Then of course the people that we have around the table. And then there has to be a social dialogue, a negotiation process, again a tripartite sort of government, employers and employees sitting together and deciding this on the go. And there has to be a proper credible grievance channel as well. If we talk about the risk factors, it's also very important to see that there are certain risks involved as well. For example, number one is the informality trap. The high enforced formal wage can push low-skilled workers into unregulated informal sectors. There is a concept called contracted labor, which is used by several of our industries, that
affects our labor in a very negative way. Then again, the weak enforcement that I mentioned, exclusion of contractors again, because if, for example, all the big companies start giving living wage, but there will be an increase in outsourcing. Then the outsourced or the contracted labor also has to be included. We have to go for a full value chain approach. Then we have to focus on incentives. There has to be an incentive-based structure, and there has to be firms may simply pass cost to consumers. This is also one of the risks that if the cost increases, then the inflation will further increase. And then there has to be some kind of financing mechanism as well to cater for the cash flow shocks as well, just like we had in COVID. So the conceptual framework, as inputs, we have the living wage adoption and the transparent bankroll payroll WPS system. Intermediate changes will be lower turnover and absenteeism. At the micro level, better recruitment and morale and reduced financial stress for workers. Operational outcomes will be fewer reworks, higher first pass yield, and just like we saw in the Unilever case, almost 5% increase in outlet productivity and improved on-shelf availability and service quality. And finally, the financial outcome, as we saw in the Unilever's case, can increase in around 9% increase in the assortment or sales. And based on that, the next slide is showing you the macro case for it. That once we have the firm productivity channels in effect, the household demand channel will also increase. So if I'm getting a better pay, then I will have a better purchasing power, and that purchasing power will eventually convert into more demand aggregation, and that will lead to a very strong macroeconomic case as well. And World Economic Forum projects that if globally living wage is implemented, then we can add 4.6 trillion to the global GDP. So this is, I think, a big number there. Next slide, Karan. Next. So if we look at the main findings, the business case is available. The operational improvements and Unilever case has already demonstrated it. The formal value chain has to be the first to come into the living wage loop because it is a low-hanging fruit, and we believe that it is more implementable there already. I think the wage systems is already banked. And then we have some binding constraints, of course, enhanced capacity, informality. These are some of the constraints there. And we have then the updated GSP Plus and schemes like that can actually affect especially our export sector and the allied sectors included there. From the firm lens, the core operation, the productivity and quality, there is an example of the San Francisco International Airport where living wage plus training regime was implemented, and their turnover rate went down to 19% from 95% annually. So these are some of, again, the examples that we have that your core operation, the value chain, and the financial overall financial aspects, both tangible and intangible, improve with the implementation of the living wage. And similarly, if we look at the macroeconomic case, I've already discussed the aggregate demand. There is a chance that there is a good probability that this can decrease the overall poverty and inequality. The supply chain resilience will increase, and the strategic risk mitigation will reduce as we will be more compatible with the international standards like GSP+.
What we recommend is that we should have a few pilots done in addition to the work that already Unilever has done. And some of the sectors that we have identified includes textile and garments, FMCG retail and logistics, food processing, healthcare, support and BPO and ITES, and this is all based on literature. Most of the countries that implemented living wage went through these sectors and eventually then got to the other ones. We suggest that the pilot sites should be Lahore, Karachi, Faisalabad, and Sialkot. These are the major industrial hubs. And then, of course, we will be going to the other sectors because this is a more district level focus. And proposed pilot, we suggest that we should have around 30 firms phased over 12 months, and we will track their productivity, retention quality, household welfare, and firm level cost benefit. And we are trying to seek some funding for this. We have already talked to ILO. And if this sort of come through, I think the case will be more stronger because this will not be one company talking, then it will be one sector or maybe a group of private sector that will be. Okay, so next is the policy levers. As I mentioned, I think it's very important that we have to get all our labor into the bank wage payment. We have to get them there. We have to activate existing laws. There are the enforcement part has to be again looked into that how we can enforce it better. If the stick is not working, then maybe we have to go for the carrot approach. Adopt principal employer liability, smart enforcement, and incentive adoption. These are all very important aspects that we need to look at the policy level. And just like I mentioned, we have to run pilots with hard KPIs, map and engage the whole value chain. We have to verify the demand and engage buyers collectively so that this all will and the slides will be available to all of you. The mention is that there are some examples, international examples that are mentioned for each of these, that why we are choosing this path. For the development partners, we will require support in terms of funding the data part of this. The anchor methodology is there, and there have been a few studies done. But I think the development partners can play a role in making this sort of a third party thing rather than the private sector themselves giving this data out and funding it themselves. So the credibility of the data collection and analysis part will improve. And similarly, the data will translate into policy evidence, and that again will result in the smart policy. Again, we have to create some kind of transitionary finance for SMEs, just like we did in the COVID. I think we have to look at utilization rates and what kind of better mechanisms can be adopted there, and fund skills and management upgrades. That again, we should, in addition to the living wage, we should also focus on upskilling and reskilling of the labor force, because the main thing that we were discussing earlier as well, कि अगर एक बंदा मजदूर है तो उसका बच्चा भी मजदूर नहीं होना चाहिए. We have to sort of create a development pathway as well. And next is, I think, the impact evaluations. I think development partners can really help there. The third party pilot, these pilots, how can they result into a good international standard impact evaluation? If we look at the governance and data architecture, just like ma'am said, we have recommended that there should be a National Living Wage Council, which should have provincial parties included to it, because eventually the labor is a provincial subject for now. And then I think transparency is very important. We have to have a digital data pipeline, some kind of dashboard where we can see how things go forward. And then annual benchmarking updates are required. Normally,
I have discussed with several members of the minimum wage committees. It's usually a very random process where they come up with a number and then try to justify it later on, rather than using empirical evidence to come up with that number. So I think we need to reevaluate these aspects as well. And then a very important function, like for all sustainability initiatives, is the measurement and verification. It's very important that we have secondary data available, some kind of primary data sources available, and then we triangulate that and come up with a performance dashboard where, of course, we can also create an opportunity for provinces to create a positive competition there as well, that they can follow each other's steps. Expected outcomes, of course, the workers will, of course, develop they will be reducing working poverty and improve their financial resilience. For firms, again, this is productivity and retention. For government, it will be a better policy credibility in terms of overall transparency and the GSP plus. And overall, we will be focusing on having improved exports. So if we, because this was a very short exercise, if we go for a longer macroeconomic or econometric exercise, we can also relate it to exports increased or investment raised, and these kind of things will eventually make maybe a even stronger economic case for living wage. And these are some of the risks that I mentioned and some of the things that we recommend that can be used as mitigation strategy, like, for example, dedicating a transitionary credit line for SME adoption, then principal employer liability, reducing the informal contractors, then weak inspection capacity can be increased through the carrot approach, as well as some digital interventions. Price pass-through, mandatory operations improvement plan can be included. And again, the informality trap that we focused on earlier can be through a phased sector-wise rollout. If we go for a sudden rollout for all sectors, it might create that informality trap there. And based on that, we recommend that we need to collect further evidence, of course, and make this more evidence-based. We can come up with good numbers on creating that policy case. Convene a permanent tripartite task force. Again, the task force has to have private sector, the government, and the workers there. We can select an independent verification partner. We can secure matched funding for SMEs. And then we can launch pilots and baseline against KPIs that are already defined. And then we believe that in 12 to 18 months, we can publish those pilot results to inform the decisions at the national and the provincial level. So this is all from my side. These are some of the references I had for this study. Looking forward to any questions you might have. Thank you. Thank you, Anand sir, for having an insightful presentation and setting the stage for our today's discussion. Basically, the living wage is a strategic economic investment. Basically, it is a double-edged sword that has the supply side as well as demand side. From supply side, it will lead to bring the efficiency and competitiveness, and from the demand side, it will lead to growth and stability, and both of them together make a vicious circle of productivity, consumption, and inclusion. So now we will begin our roundtable discussion exploring the practical pathways for implementing living wage in Pakistan. So starting off with Mr. Sheikh Waqar Ahmed. Sir, can you please give us some suggestion on the framework that has been presented? And also, the Nestle has been a leader in aligning business practices with sustainability goals. How can multinational corporation integrate living wage standards into the ESG and supply chain due diligence framework, particularly in Pakistan, diverse subcontracting environment? Over to you, sir. Thank you very much. I think living wage, and thank you very much, Ahad, for making us such a great presentation, quite elaborated one. So I think it's really set up a stage to discuss this matter, and it's a very novel cause. So living wage is something which I think sometimes one gets confused. What is about living wage and the salary that wage that normally labor get? I think it's very rightly defined that, and it's
changes from geographical destinations. From one location to another location, it may not be same, and it should not be same. Because you all know living standard in Karachi or Islamabad, Lahore and Faisalabad may be very, very different. And at different levels. It's not only for the labor, for young professional who's moving from Lahore, their first surprise is the living standard, the housing price in Islamabad. And they get really surprised the kind of housing they have to pay for. And I'm sure this is the same when at the manufacturing level also, this is a similar challenge. I think when it comes to global corporates like Nestle, Unilever, and many others like Pepsi and Coke and many of likes us, I think it's not, and even reputable companies in Pakistan. I will not separate only MNCs, but they are very, I think, good employers in the country as well. The large textile units, they have been very, very good employers. So I think that challenge does not exist there. So they do pay living wage, and because there's a market forces that drive this living wage. So we all know that, if Nestle is not paying well to employees, they may move to Unilever or they move to somewhere else. So everyone is cognizant of this. They know it, the realities, they know how to compete with each other, and we benchmark with each other as well. What one good company is doing, and same is for the good local companies as well. So there are certain forums that we follow, or certain Mercer that we follow, a global company. We benchmark each other, how we are remunerating our people. So I think the debate goes beyond that. So it's not people probably sitting here, but those who are down there. With us, even our distributors, one of them, Sigma, is very well-known distributor with us, and there are the many others. They are also above that ladder. So challenge is not here. Challenge is much beyond. And I share with you my own experience of being there on the governing board of PESI, which is Punjab Employee Social Security. And then I was for 2 tenure at the same time at Punjab Worker Welfare Board. And believe me, these two institutions have so much funds available and so many benefits available for the mid-tier companies. If they, for example, if you register with PESI, you can, your hospitals that they have in the major cities of Punjab, your medical should be taken care of. They have so much funds available with them that they can do that. One, the smaller and medium enterprises, of course, there is a very high taxation system. There are some other challenges coming from the government. They avoid registering themselves with PESI or Punjab Worker Welfare Board. Though there are a lot of benefit. But Punjab Worker Welfare Board, education is free, not till grade 10, not till grade 12. Even they support talented student in for the medical colleges. So it's not like, the space is empty. Unfortunately, we are not able to tap them. Government is not able to convince private sector to trust them, register them, because they know the moment they register with PESI, it's not only PESI, then the FBR will come after them. So that restricts them to come with PESI. There are a lot of, for example, with PESI, ideally, if I tell you the Lahore city, 90% of the Liberty market is not registered with them. They should have. There are big stores who have more than certain employees that come under the formula of, or the definition of PESI, but they don't get registered. They go make presentations. I've in fact, being a active member at Lahore Chamber, I took them to Lahore Chamber also. But the challenge is the same. I could see them on the faces of the entrepreneur there. We are not afraid of PESI, and we are not afraid of Punjab Worker Welfare Board. Our challenges are different. So how we can find a solution where someone is with PESI, if it's not made, challenge. So this living wage, because it's not only the wage part, it's only the services that they're getting from this institution. So this is the, if they're getting free education, if they're getting free medical, these, I think, two biggest bill for anyone. School. I know when we talk about CSR, all those good companies, the two things that everyone faces today are either our employees or even the communities that we work with. They ask for education, they ask for medical services, or they ask for clean water. These three, at least in my understanding, these are the
biggest challenges they face. So I think how we can overcome that, we improve the role of these existing institutions in your, I think, framework that you are drafting, I think is very, very crucial. If we leave them out of this framework, believe me, we're not able to achieve anything that we want to do. So please look into it. I know Unilever is looking into it in more details, but this what I found can be very, very useful. At least in Punjab, I can clearly share with you they have a lot of potential, and that can really serve. And the good part of PESI and Punjab Work Welfare, the labor unions are representing their unions there. Sometimes, the political parties, the different union comes in, but they are represented there. So it's not like the unions and the labor are not being represented there. And they have been, so I think there's a lot of scope there. So that's my input will be, I think we should not leave government institution like these, and find out a way how, if someone registered with PESI and Punjab Workers Welfare Board, then at least, the other government institution, they give them some space. So they are not scrutinized because of that, right? Though everyone should be paying taxes. I think that's another good subject. One should not avoid paying taxes to government of Pakistan, but we have to find out, what comes first. So that's all input I can make. Thank you, sir, for giving your valuable feedback on our framework and highlighting that there is a need for public-private partnership in the domain of living wage in Pakistan. For the next, Mr. Ali Kamal, can you please give us some feedback on the framework that have presented, and how does the government plan to integrate the living wage benchmark into the national planning, budgeting, and social protection framework as proposed under the National Living Wage Council that is presented in the framework? Over to you, sir. Thank you very much, and double thank you, mine. As far as the living, a very, very, very good presentation, Ad, and a good study to start with. I think FES supported that, I assume. Living wage, when we talk about, it's a productive employment. We are working on with the Prime Minister office these days, and productive employment means that they are getting living wage. And what is living wage? It's a competitive salaries between Unilever and Nestle. It's a competitive salaries between the two private sector under the oligopoly framework. But then in economics, we always call it efficient wage market. Or whenever there is a shirking on the job, we have to hire another person and give him another wage, or give double wage to that person so that he cannot shirk on the job. So there are three concepts together in the living wage, and then the fourth one is the poverty one. So we have to reduce the poverty at a certain level when living wage is more than something which is, we call it minimum wage. So it is, as Sheikh Saab has already mentioned, it is very city specific. It is very whether it's a rural area, whether it's an urban area, whether it's an urban metropolitan area, cosmopolitan area, it's a Gilgit-Baltistan, Gilgit city, or a Lahore city, or a Karachi city, or Islamabad. So whenever a person comes to Islamabad, it's like, oh, bada mehanga city hai toda. But whenever I see the Karachi DHA or other parts of the Karachi, which is very high housing prices over there. So it depends where you are living and what kind of taxation. So there's a model of taxation as well in the localities as well, that wherever you are living, if you are paying high taxes, then you are getting high privileges. So your schools will be good, your hospitals will be good, your roads will be good. So that's a capital model of taxation as well. So living wage depends on where you are living as well. So it includes housing, food, healthcare, transportation, childcare, you name anything, and it's there. Unfortunately, we have been not talking a lot on the living wage, but we are talking about the productive employment under the Rana Mashood Saab in the Prime Minister Youth Program. Having said that, there are a few studies who have quoted who have estimated some estimates, the estimates of living wage. HRCP estimated around 75,000. And whenever we had COVID 5 years ago, and we estimated that the basic kharcha of the household is 6,000 rupees. So
living wage is 75,000 and Sukha ration is 6,000. So there's an anomaly between the living wage as well. Then KP estimated around 94,000. Sialkot rural estimates are 63,000. So these are all 2020, 2021, 2019 studies, though inflation has increased by 127% since then. So we can double it. Another thing which is very important, because I am the SDGs guys as well. So it depends. It affects a decent work environment as well. So we need to take care of that as well. Few international firms, I already said that, whether it's Nestle or Unilever or other organizations, that they are giving living wage now. Whether you two are here, whether you agree or not, Telenor is giving some kind of living wage as well. Jazz is giving a living wage as well. So international companies are pro holding their or taking care of in a positive way of their employees, so that they do not want their employees to work extra hours in other jobs as well. I remember my host family in US, they said that we do not want to go to Safeways, we do not want to go to Walmart, because those guys are doing 3 jobs. And the Safeway the Safeway store rather, they are paying handsome wages so that they can just do 1 job, which is 8 hours or 10 hours. So in Pakistan, the problems are that we need to define and adopt living wage benchmark. Even though it differs from city to city, we have the DC system is there, AC system is there. We unfortunately do not have, ma'am, the local governments. Otherwise, we will have Udan Pakistan and Vision 2025. As far as the Planning Commission is concerned, both addresses human capital and inclusive wealth indicators, which is another session going on in SDPI conference. The inclusive wealth includes all the living wage and all kinds of things. So we may offer a living wage for different firms, but it hurts overall than inflation. When you're getting higher wage, suppose you're getting double the wage what you are getting for the 25% of the firms, then inflation will go up. So that's another concern for the macroeconomists like Ahad. In the end, it is an interesting session. It is still not a law whether it's a minimum wage. Minimum wage is a law, but living wage is not a law. So it is not a law. So first of all, we have to work on the law side, then process institution side. Then I believe that before we ask for the law and implementation, which is very ineffective in Pakistan, most of the cases, we have to ask all the firms, the bigger firms or 535 firms in the stock market, listed in the stock market, that they can start voluntarily. Let's see what the effects are, and then we will make the law after the evaluation and monitoring of that policy by the private sector, by SDPI, financed by FES, so that we know that where the inflation is going and where the fiscal deficit is going and where the poverty is going. So after that, we will be able to have the law, process institutions, and implement in a proper way. Thank you. Thank you, sir, for sharing your valuable insight. After that, Mr. Abdullah Dayo, FES has a long-standing focus on social justice and labor rights, and how triplets dialogue between government, labor union, employer federation can strengthen to build a consensus for living wage implementation in Pakistan, and what are the lessons that can be learned from international experiences as well? Over to you. Bahut shukriya, Mahin. Thank you, Ahad. I think this is one of the most important sessions in terms of seeing the relativity, because if we have 2% of the elite in the country, then 98% are striving for the living wage. So this is directly linked with the majority of this country. And in the beginning, like when Madam Senator Roshan Khurshid Saiba was giving her opening remarks, she very much touched the topic of having a strong social contract when she talked about the basic needs, health, education,
and like social safety and security. So what we feel that if you are not having living wages, your social contract between the state and citizens is weakening. रियासत और शहरियों के दरमियान एक बाहिमी इमरानी मुआहिदा होता है, जिसमें रियासत के साथ जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं तो आपका एक मुआहिदा हो जाता है कि रियासत ने आपकी बेसिक नीड्स को मुकम्मल करना है और एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड करने हैं। अब जब रियासत वो नहीं देती तो वो इमरानी मुआहिदा कमजोर ऐसे होता है कि जब मुझे अच्छी सेहत नहीं मिलती तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ, जब मुझे अच्छी तालीम नहीं मिलती तो मैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता हूँ, और जब मुझे सरकारी सतह पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो मैं नीली वर्दी वाला सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ। तो क्या होता है कि मेरी डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर खत्म होती है और स्टेट के साथ वो जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है आम शहरियों का, वो कमजोर होता है। तो दिस इज व्हाट मैम आई सॉट फ्रॉम योर टॉक वाज के ये जो लिविंग वेज के अगर मसले को हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें तो रियासत और शहरियों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मजबूत हो सकता है। और इसकी जो श्योरिटी है, इट हैज बीन enshrined very much into the constitution of Pakistan when we see the article 38 of the constitution which talks about the socio-economic well-being of the citizens। तो मैं आज आईन पाकिस्तान से एक टुकड़ा निकाल के लाया हूं जिसमें आइन कहता है कि दी स्टेट, आर्टिकल 38 कहता है दी स्टेट शल Number A, secure the well-being of the people, irrespective of sex, caste, creed, or race, by raising their standard of living. और B में कहते हैं कि the state shall provide for all citizens within the available resources of the country, facilitates for work and adequate livelihood। तो रियासत ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर करवा दिया। तो फिर क्या हुआ कि उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक जो मैकेनिज्म हमने जो लीगल फ्लोर डिसाइड करने के लिए तैयार किया था वो था मिनिमम वेज। लेकिन अब दुनिया मिनिमम वेज से आगे लिविंग वेज की तरफ जा रही है, और जिस तरीके से शेख साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही इसमें, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल हम देखें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो टोटल कोई 75 से 80 मिलियन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, और उसमें से जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो 72% इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि लेबर स्कोप से ही निकल जाता है। मतलब कि मेजॉरिटी जो है वो आपके लेबर स्कोप में आती नहीं है। और इसी तरीके से अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें हम अपने ओवरऑल जो लेबर है तो 24% जो है ना वो खवातीन है। तो और वो खवातीन भी ज्यादातर इनफॉर्मल वर्कर्स में, डोमेस्टिक वर्क और उसमें आते हैं, जो कि हमारे पास एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ यूनिलीवर के साथी बैठे हुए हैं, इस तरीके से दीगर जो सेक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर वहाँ के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन टेक्सटाइल की बात यहाँ पे हुई, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को कहीं पे भी कवर्ड नहीं है। हम अब अभी अगर लिविंग वेज की भी बात करेंगे तो इट विल बी अगेन लिमिटेड टू अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। जो हमने यहाँ पे देखा है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो 24% आबादी है वो ऑलरेडी लाइक नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे जाती जा रही है, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। और 40% के करीब जो आबादी है वो जिसको हम कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है वो उस सेक्टर में फॉल कर रहे हैं। हमारे पास मिनिमम वेज है जिसमें 40,000 रुपए कुछ सूबों में ने मुकर्रर की हुई है। अब वो 40,000 रुपयों में जब मैं देखता हूँ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं पड़ोस में, उनसे मैंने पूछा आपकी कितनी इनकम है, उन्होंने कहा 32,000। अब वो 32,000 में से कहते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 4-5 हजार उनका खर्चा आता है। 15,000 वो कहता है कि 6 लोग हैं घर में और 15,000 का राशन आता है। 15,000 में आजकल आप 2 लोग डाइनिंग करें तो किसी रेस्टोरेंट में खर्चा आ जाता है। फिर उसके बाद उनके 3 से 4 हजार बिजली का बिल है, उसके बाद खाना पीना, ये सब्जी फ्रूट तो खैर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका अफेक्ट क्या पड़ा है लिविंग वेज का ना होना। तो वो कहते हैं कि सर सबसे पहले मैंने ये किया कि अपनी बेटी को स्कूल से निकलवा दिया है ताकि वो स्कूल से जो है थोड़ा खर्चा बचेगा। उसके बाद दूसरे बच्चे को मैं निकलवाने की सोच रहा हूँ। तो जो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप जीडीपी ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो इस तरीके से कि जो लिविंग वेज है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है और दूसरा आपकी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आपके पास खर्चा, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी तो मार्केट में खर्च होगी, वापस आएंगे पैसे। वो जब वापस खर्च होंगे तो वहां पे आपकी जीडीपी ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे।
इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, तो इस अभी तक की जो फिगर है फूड इन्फ्लेशन, वो 32% है फूड इन्फ्लेशन। अब वो फूड इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब हम देखते हैं कि कौन किसका जो है ना परचेसिंग पावर कितना है मार्केट में, तो उससे पता चलता है कि लिविंग वेज ना होने की सूरत में वो परचेसिंग पावर हमारा कम से कम होता जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये कम होता जाता है तो जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है समाज में। ग्रोथ कम हो रही होती है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही होती है। लेकिन अब जो रियलिटी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी बात की आपने, इस जो कि पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का, और उस टेक्सटाइल में तकरीबन कोई 45 लाख मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं, 4.5 मिलियन। और अच्छी बात यह है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ज्यादातर वो अपना मिनिमम वेज इंश्योर करवा रहा है, लेकिन लिविंग वेज वो भी नहीं दे रहा। कहीं पे अली कमाल साहब ने जिक्र किया कि कुछ दे रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में जैसे आर्टिस्टिक है, मिलेनियन है, और दीगर जो कंपनीज है कराची में, हमने उनके साथ काम किया है, तो वो सिर्फ मिनिमम वेज को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी भी हम देख रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस्लामाबाद समेत जो तनख्वाह दी जाती है वो 18 से 35 हजार के दरमियान, 32 हजार के दरमियान दी जाती है। अब वो 18 से 32 तो वो मिनिमम वेज में भी नहीं आता, तो आप लिविंग वेज की बात कर रहे हैं। और फिर आपने कहा कि लिविंग वेज रीजनल सतह पे डिसाइड होता है कि इस्लामाबाद का कुछ और होगा, तो चीचा वतनी का कुछ और होगा, रावलपिंडी का कुछ और होगा। जो आईएलओ कह रहा है कि रियल वेजेस के सिलसिले में पूरे साउथ एशिया में जो है ना वो एक डिक्लाइन आ रहा है, जिसमें 3.8% जो है वो रियल वेज में डिक्लाइन आ गया है। और सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन आ रहा है साउथ एशिया में, शार्पेस्ट डिक्लाइन जिसको आईएलओ ने डिक्लेयर किया है वो फॉर पाकिस्तान है। सो इट्स डिक्लाइनिंग। पाकिस्तान की खवातीन की मैंने बात की, सर ने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात की ट्रेड यूनियंस के बारे में कि सिंस दे आर सिटिंग इन फोरम्स लाइक सेसी या पेसी, मुख्तलिफ सूबों में जो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, तो वहां पे वो बैठे होते हैं। और ट्रेड यूनियंस की जो डेंसिटी को देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हमारी 80 मिलियन वर्कफोर्स है उसका 1% जो है ना वो ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन है, ओनली 1%। एंड विद इन दी 1% जो विमेन ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, दे आर ओनली 2%। सो जो ट्रेड यूनियन डेंसिटी है, तो अब जो ये जो आपका मौजू है लिविंग वेज, ये दरअसल मेरे ख्याल में ट्रेड यूनियन के एजेंडा पे होना चाहिए, वर्कर्स के एजेंडा पे होना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि यू हैव इनवाइटेड द प्राइवेट सेक्टर टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट दिस थिंग and having more like government officials as well. इसके अलावा जो 21% जो खवातीन हैं वो इस वक्त उनको वो लिविंग वेज के लिए इसलिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती क्योंकि वो खवातीन जो है ना डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो घरों में काम करती हैं। तो वो घरों में तो इस तरह का कोई डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट इस्लामाबाद में है, होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट पास हुआ है सिंध में और कुछ सूबों में, लेकिन मसला ये है कि वो उन पे लागू नहीं हो रहा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बड़े मसले हैं। हमारे पास थोड़ी सी टाइम कंस्ट्रेंट है। अच्छा, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसके साथ जो मैं एक दो चीजें आपके गोशगुजार करना चाहूंगा, फिर देन आई एंड फॉर एग्जांपल जैसे आपने जो काम किया है, एक इंटरनेशनल अकॉर्ड साइन हुआ था जिसको अकॉर्ड इंटरनेशनल कहते हैं, जिसमें दुनिया के जो तकरीबन ब्रांड्स थे उन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं बिलखसूस पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वहां पे हेल्थ और सेफ्टी पे जो है वो इंश्योर करवाया जाएगा। इसलिए एक जरूरत है एक लिविंग वेज अकॉर्ड साइन करने की अमंग ऑल दीज बिग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग दीज ब्रांड्स। उसके ऊपर अगर थोड़ा काम किया जाए। दूसरी बात यह कि जो हमारी करंट प्रोविंशियल मिनिमम वेज के जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि वो लोकल लिविंग कॉस्ट को देखते हुए कुछ सर्वे करवाए जाए और उसके बाद मिनिमम वेज को डिसाइड किया जाए। जहां पर वो ग्लोबल लिविंग वेज कोलिशन का जो एक एंकर मेथोडोलॉजी है उसको मेरे ख्याल में आपने तो कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, लेकिन इसको वर्कर बॉडीज के साथ मिलके इसको एक्सपेंड करवाया जाए ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और जो लिविंग वेज वाला मैकेनिज्म है और जो लिविंग वेज की लेबर इंस्पेक्शन होती है या नहीं, फॉर एग्जांपल सर कराची कितना बड़ा है
और या पूरा सिंध सूबा देख लें तो उस पूरे सूबे के लिए सिर्फ 500 लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, ओनली 500। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना लेबर इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाए और ताकि इंश्योर करवाया जाए कि मिनिमम वेज से लिविंग वेज का सफर सही जा रहा है या नहीं। और प्लस ये कि बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए पूरे पंजाब में और दीगर सूबों में डीवीसीज बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंट कमेटीज। वो ट्राईपार्टाइट कमेटीज थी, गवर्नमेंट का बंदा भी था, वर्कर भी थे और उसके बाद सिविल सोसाइटी के भी लोग थे। तो इस तरीके से और एम्प्लॉयर भी थे उसमें, तो डीवीसीज बनाई जाए ताकि इसको इंश्योर करवाया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के अगेन जो लिविंग वेज है वो इट्स नॉट अ चैरिटी, it's the right, constitutional right of every citizen in this country, as I mentioned, and I gave the reference of Article 38. तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको मजीद एक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया जाए। And once again, thanks to STPI for bringing this subject. Thank you. थैंक यू अब्दुल्ला साहब फॉर हाईलाइटिंग कि हमें जो है गवर्नमेंट और जो आवाम है उसके दरमियान हम पैदा करने की जरूरत है। और इसके हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो यूनिलीवर ने सेट की हुई है। So now I would like Ms. Fatma Arshad to give her feedback on the living wage implementation strategy that we have presented, and what are the practices and what are your key inputs on how living wage can be implemented and how we can take this thing forward. Thank you so much, Maheen. I'll keep my comments very short because I am enjoying this discussion so much today. दो रीजंस हैं। जब यूनिलीवर ने 2020 में अपने लोगों को लिविंग वेजेस दी थी और फिर हमने पार्टनर्स की तरफ मूव किया था, और फिर व्हेन वी स्टार्टेड एंगेजिंग विद इंडस्ट्री, एंगेजिंग विद सिविल सोसाइटी, तो पहला सवाल जब हम ये बात करते थे होता था ये क्या चीज़ है। दैट वाज आवर फर्स्ट ईयर, ये है क्या चीज़। दूसरे साल बात होती थी ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरे साल बात होती थी कि करना बहुत मुश्किल है, और आज बात हो रही है कि कैसे किया जा सकता है। आई लुक एट इट एज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. Even though the task is tough and there's a lot to be done, for us to have moved in the span of 2-3 years from not knowing about it to talking about how we want to implement living wages is a big sign of progress. Unilever, we always take pride in being one of the best, one of the few. In this, हमारा कोई intention नहीं. We want to be one of the many people giving living wages in Pakistan. एंड इसको करने के लिए यूनिलीवर का करना या फिर हमारे पार्टनर्स का करना, या जो हम अपनी वैल्यू चेन में कर रहे हैं जिसपे हम 70% लिविंग वेजेस से पहुंच गए, दैट इज नॉट इनफ, विच इज व्हाई making sure that not just the private sector but civil society and government can work together on this agenda is the most actionable thing that we can get out of this discussion today. And I'm very pleased because no one has people have raised challenges, but no one has shared any reservations in getting this done. I actually want to highlight the example of the way that we have been able to do it, but also how our partners have really taken on this mission. And I will stop here because I think Ahmed would be the right person to really talk about कि Unilever का करना शायद आसान हो, but there are a lot of local companies in Pakistan that are setting that example. वो इसको किस तरह manage कर रही हैं? So over to you, Ahmed. जी, अस्सलाम वालेकुम. I think Ahad साहब ने has made my job much easier. His detailed presentation has made, as I hope, convinced everyone. And the invitation that I got from Unilever, I think, thank you for inviting me here. And I think I am sort of the poster child for this, I think. And it's not about convincing anyone else. It's about doing what's fair and what's right. And in my belief, when we started this, it was a leap of faith. But over time, it's, as Mr. Ahad has also showed, it has a genuine business case. And that business case is very solid. We have done a lot of work on this, and we've done this for the last, I think, 2 years almost. And as you know, I can say, hopefully I can convince you on this, that this is an absolutely solid business case. And anybody who has any reservations or anybody from the industry who has any reservations can come visit us, spend time with us, see
meet our employees, check out their motivation level, check out their feedback. And I think that will be a good enough case for everyone else. And if we take this 100 years back, if I could give the example of Mr. Henry Ford, when he doubled the wage from, I think, $2.35 to $5 in 1914. So everybody thought he'll, go out of business. He's mad. Everyone used to say that. But he turned around the industry, and I can see in Unilever what you guys are doing. I think this will change the industry as a whole, not just one firm, not just one sector, but what I'm looking at, it's changing the industry as a whole. And I'm glad to be a part of this. Thank you. Thank you, Amit, for highlighting that living wage is not a wishful thought. It is practically implementable. Now, I would request, we have an online participant, Dr. Lubna. Pride is working, my question to you is that Pride is working on the productivity and economic inclusion strongly with the living wage policy. How do you view the relationship between wage adequacy, firm productivity, and sectoral competitiveness, especially in labor-intensive environment? जी अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया महीन for inviting me for this very important discussion which is very close to my heart. Are you listening me? Yes, we can. जी जी थैंक यू थोड़ा मैं जरा ट्रेवल कर रही हूँ और आई विश कि मैं फिजिकल वहाँ मौजूद होती तो मैं एक दो बातें कहूँगी कि जो सारी मैंने ये डिस्कशन सुनी और जो आपका क्वेश्चन है लिविंग वेजेस होनी चाहिए इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे लिविंग वेजेस की तरफ ही जाना चाहिए लेकिन हमें ये सोचने की भी जरूरत है कि हमारे यहाँ बेशुमार कवानीन कायदे हैं आइन का भी दोस्तों ने रेफरेंस दिया सब चीजें मौजूद हैं मिनिमम वेज का कानून मौजूद है इसके बावजूद हमें देखना होगा कि उसकी आज की तारीख में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है क्या हो रहा है तो हमें जो भी अपनी लिविंग वेज के लिए सोचना होगा तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए दूसरी बात ये है कि आप जैसे कि एक दोस्त ने बात की कि इनफॉर्मल वर्कर्स तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी अगर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे टोटल जो एम्प्लॉयड जो लोग काम कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में किस तरह है तो लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जो कि पाकिस्तान ब्यूरो कंडक्ट करता है तो 72% हमारे इनफॉर्मल वर्कर हैं और एग्रीकल्चर के अलावा और हम सब जानते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर भी इनफॉर्मल नेचर की है कोई फार्म या इस तरह नहीं है खैर इसके अलावा जो हमारे फॉर्मल वर्कर हैं वो कोई 10% हैं वो जो 10% हैं वो फैक्ट्रीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं जिधर भी वो सारे प्राइवेट में भी जो किसी पक्की सेटिंग में है वो है तो जो भी अभी तक मुल्क का कानून कायदा बना हुआ है उसमें सारे इंस्टीट्यूशन कवानीन कायदे सिर्फ उन आप कह सकते हैं कि 10% की कवरेज के लिए हैं तो हमें इस लिविंग वेज को जरा एक सोचना चाहिए कि जिसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर ब्रिक किलन के वर्कर जो इस तरह और भी बहुत सारे वर्कर हैं जो इसकी कवरेज ज्यादा हो छोटे इंटरप्राइज पे जो काम कर रहे हैं जब वो इंटरप्राइज ही रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके वर्कर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको हमें देखना होगा कि जो भी हम पॉलिसीज प्रोग्राम जो भी हम फ्रेमवर्क बनाएं हम अपने जो एम्प्लॉयड जो हमारा हर तरह के वर्कर हैं उनके लिए हम ये बनाएं और पॉलिसी जो भी हो जो ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो अच्छा अगर हम अपने उस पे जाते हैं वर्कर की प्रोफाइल पे हम जाएं तो हमारे ओवरऑल वर्कर का कोई 60% जिनके पास नो फॉर्मल एजुकेशन है तो हमें इस चीज को भी जहन में रखना होगा और ये जो हमारे वर्कर हैं इनके पास जैसे मैंने कहा लैक ऑफ लीगल कवरेज है
इनकी वीक बार्गेनिंग पावर होती है, इनके इरेगुलर इनकम पैटर्न्स होते हैं। तो हमें मतलब एक जो एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर है वहां तो इसको इम्प्लीमेंट करना या वो इतना मसला नहीं, लेकिन हमें अपनी सारी सोसाइटी के जो एम्प्लॉयड हैं उनको साथ लेके चलना होगा। और किसी वही जो मैं बार बार कहती हूँ कि हम सब अब बैठें और किसी इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पे आए कि जब मुल्कों पे ये मसला बना तो उन्होंने फिर क्या वन लाइनर पर्सपेक्टिव लिया कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो लिविंग वेजेस जब हम इसकी बात करें तो हम एक बड़े हॉरिजन में और सबकी कवरेज की बात करें। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर लुबना। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब ये लिविंग वेज का एक कॉन्सेप्ट आया था तो हम लोग की भी सोच यही थी कि मतलब ये किस तरह होगा, लेकिन हमारे पास एक यूनिलीवर की एक एग्जांपल है, एक पायलट कह सकते हैं उसको, कि उन लोगों ने लिविंग वेज इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी देखा कि किस तरह उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा आज इसी डोमेन में जो है वो गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंटरेस्ट है। सो हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे चौधरी सालिक साहब, फेडरल मिनिस्टर, उनकी पीएम ऑफिस से एक इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी तरफ से ग्रेट आया हमारी तरफ। मैम आप क्लोजिंग के लिए प्लीज Open it if anybody wants to ask questions, but before that, what Abdullah said, I will agree. Unilever's आपने बहुत अच्छी presentation दी, but देखिए you cannot compare. आपने खुद ही बोला about बलूचिस्तान coal mines वालों को, we cannot compare Nestle or Unilever. We are talking here of wages जो अभी मिल रहे हैं लोगों को all over Pakistan, and what domestic workers का क्या हाल है, दूसरे लेबर्स बेचारे जो जमींदारों में काम करते उनका क्या है. वी वांट सोल्यूशन फॉर दोज पुअर पीपल हु आर वर्किंग, कि उनका क्या होगा. जैसे आई थिंक अब्दुल्ला पॉइंटेड आउट राइटली, अभी वकार साहब यहाँ नहीं है, वकार साहब ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की बात की. I was a minister over there and I had seen it myself. They've made things so difficult. गरीब तो जा ही नहीं सकता है. We talk, we say हमने ये कर दिया वो कर दिया, मगर गरीब वहां तक पहुंच ही नहीं सकते. इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि they cannot fulfill that requirement. So what our today's session, we wanted to know, and we still want to know. I know कि आप लोग बहुत अच्छा पे करते हैं and आपने देखा होगा कोल माइनस, हाँ नहीं आप हमारे साथ है, मगर आई एम सेइंग कि आप खुद देखिए कि आपने पॉइंट आउट किया एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि बलूचिस्तान में जो हुआ कोल माइनर्स के साथ, और वैसे भी दे आर सो लो पेड पीपल कि हमें उनके लिए वी हैव टू वर्क इट आउट प्रॉपरली एंड लुक एट इट कि क्या है, किस तरह नेस्ले वर्क करे या यूनिलीवर वर्क कराए. दूसरे हम यहाँ बहुत गरीबों की बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे अब्दुल्ला ने कहा, क्या उनको खाना मिलता है 2 टाइम का, क्या इनकी एजुकेशन है, इनकी हेल्थ है. वी डू से कि फ्री एजुकेशन है, बट आपने देखा फ्री एजुकेशन का क्या हाल है. हेल्थ फ्री है, हेल्थ एक गोली आपको हॉस्पिटलों में मिलेगी नहीं. यू वॉन्ट इवन गेट मेडिसिन. गरीब लोग बेचारे परचेस करके आते हैं. तो ये चीजों को हमें गौर से देखना चाहिए. आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट सीरियसली. और आज इतने अच्छे आहद आपने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, प्लीज टेक इट अप एंड आई होप एंड आई फील कि जो आज के रिकमेंडेशन होंगे, we would like to hear in your new other conference next year in 2026 के आउटपुट क्या हुआ. इतने अच्छे सजेशन होते हैं, इतने अच्छे स्पीकर्स आते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं, आगे हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, मगर हमारी पब्लिक ये भी जानना चाहेगी कि उसमें से कितने रिकमेंडेशन में अप्लाई होते हैं एंड डू दे अप्लाई ऑन दैट, कि खाली हम ही बात करते हैं 4 दीवारों के बीच में एंड वी सेटिस्फाई आवरसेल्व्स, ऐसे ना हो. And I hope the best for everybody. But we would like, anybody wants to ask question, you all are most welcome. Youngsters are sitting, I'm sure they want to ask. You can ask Ahad because उनकी presentation बहुत अच्छी थी, and Abdullah is sitting here, so they can answer. Ahad? So anybody have any question regarding this? Okay, Assalamu alaikum. It's an honor to be here.
I'm a law student, so I'm not an expert, but I had this question that Pakistan has ratified ILO Convention on Fair Remuneration, right? So why haven't we developed a law for living wage implementation? Like, for instance, if there is a law defining living wage, like we have minimum wage law, but there is no law defining living wage in a specific. एक सर थे उन्होंने बोला कि हर जगह का लिविंग वेज डिफरेंट होता है, ठीक है? तो फॉर इंस्टेंस हर जगह के लिए हम अलग अलग लॉ जो लिविंग वेज है वो लॉ एक स्टेट्यूट में डिफाइन कर लें. So I think this is a question क्योंकि ऐसा हो सकता है या नहीं. I want to know from the senior people and also a recommendation that maybe it can be possible. Thank you. सर मैं अच्छा इसमें पाकिस्तान के केस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसको और ऑफ कोर्स आप देखती होंगी क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, सो उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन अ सोशल वेलफेयर स्टेट. तो सोशल वेलफेयर स्टेट के केस में लिविंग वेज की शायद जरूरत ना हो, वहाँ पे मिनिमम वेज भी काफ़ी हो, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट जो है वो आपको दे रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस. जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बात की कि आपको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप प्राइवेट एजुकेशन लेने जाओगे, आपको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे. तो वो जो कॉस्ट है दैट इज इन एडिशन टू जो जो वो बेसिकली गवर्नमेंट को पे करनी चाहिए थी. बेसिक अजम्पशन ये है. वो यूएन अगर आप वो फंडामेंटल राइट्स का जो वो है चार्टर है उसको अगर आप देखो तो उसके अंदर यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये आई थिंक 25 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ देम. हमें ट्रांसपोर्टेशन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो मुझे अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी, उस पर खर्चा होगा, वो सारी चीज़ें. सो इस वजह से लिविंग वेज वहाँ पे नहीं है. बट द पैराडाइम इज शिफ्टिंग. थोड़ा सा मैं जो कार साहब बात कर रहे थे, हमारी लाहौर में भी इस पे काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी थे. सो ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो उनकी फिगर थी 17% ऑफ लेबर इज रजिस्टर्ड इन पैसी. जो टोटल यानी जो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो लेबर फोर्स है, मतलब मैं उस लेबर फोर्स की बात नहीं कर रहा जो PSLM डाटा दे रहा है, यानी इनफॉर्मल के बाद जो आपकी फॉर्मल लेबर फोर्स है जो इसको आप रिकग्नाइज कर रहे हैं लेबर फोर्स में, उसका सिर्फ 13% है जो कि पैसी में रजिस्टर्ड है. सो अगर जो है वो बाकी लोग पैसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. और फिर उसी में हमें एक पर्सपेक्टिव ये मिला कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं भी उनको कितनी मुश्किलात आती हैं वो पैसे निकलवाने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल आपके घर के करीब नहीं है, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, और आप फॉर एग्जांपल हार्ट का कार्डियक अरेस्ट का केस है, आपके पास चांस नहीं है कि आप ट्रैवल कर सको, तो आप अगर किसी और हॉस्पिटल चले जाओगे तो उसका बिल क्लियर कराने में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसकी अमाउंट भी बहुत कम है. मतलब उनके सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में तो आप ज़्यादा पैसे भी खर्च करवा सकते हैं, लेकिन बाहर जब करवाते हैं तो उस पर बहुत स्क्रूटनी है. तो इस तरह के इश्यूज हैं. और मेरा उस पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है कि आई थिंक जब भी हमारी गवर्नमेंट सब कुछ खुद करना चाहती है, जब भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्समेंट करना चाहती है, वो हमेशा मैस क्रिएट करती है, वो कोई भी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर. उसके बजाय आप एक कैरेट अप्रोच यूज करें, आप इंसेंटिवाइज करें, लोग खुद आपके पास आएंगे. मैं एग्जांपल छोटी सी देता हूँ. नॉट फॉर प्रॉफिट जो कैटेगरी है, देयर इज नो उसका कोई रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार नहीं है पाकिस्तान में. मतलब आप सेक्शन 42 भी रजिस्टर हो जाएं तो यू आर नॉट फॉर प्रॉफिट को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी उनकी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी. तो इस तरह का मैकेनिज्म आई थिंक इसमें भी बनाया जा सकता है जिसमें कोई आपको वो हार्डकोर इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व ना हो. तो वो सर शायद लेबर इंस्पेक्टर बढ़ाने से काम और खराब हो जाए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है उस पर कि आप इंस्पेक्टर्स की जरूरत ही ना पड़े. अगर एक कंपनी अच्छा कर रही है उसको इंसेंटिवाइज करें कि वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, उसकी बेस पे उनको कोई टैक्स सर्टिफिकेशन करवा लें, थर्ड पार्टी असेसमेंट करवा लें, जिस तरह PCP का मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बेहतर हो जाएगा और लोगों जिनके लिए आप आसानी पैदा कर रहे होंगे वो एक्चुअल आसानी होगी. अभी उसमें भी एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, एक उसमें भी क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. जिसमें अब्दुल्ला भाई ने बात की कि आपका
आई थिंक 3% है सर जो यूनियनाइज्ड है, मतलब जो लेबर ट्रेड यूनियन के साथ है, लेस देन 1%। अब वो नॉर्मली इंडस्ट्री की जुबान में थर्ड पार्टी लेबर, तो वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड लेबर जो है वो एक अलग क्लास बन गई है। उनको आप सैलरी दें ना दें, उन्हें मारें, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल ना करें, कोई पूछने वाला नहीं। वो जो यूनियन वाले हैं वो अपने लोगों का प्रोटेक्शन कर लेते हैं और उनका काम करवा लेते हैं। तो आई होप कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। मैं इस पे वेरी ब्रीफली, आपका नाम? महक, आई गेस लाइक वी आर हैविंग ब्रिलियंट ऑडियंस एज वेल के आईएलओ को कुछ लोग पढ़ते भी हैं। हम इसको C100 कहते हैं अपनी जुबान में। इट्स लाइक इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आईएलओ। अब उसकी जो आप रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें कन्वेंशन में, तो इट्स रिम्यूनरेशन मींस मिनिमम वेज। So minimum wage, we have, in provinces, we have minimum wage boards होते हैं हर सूबे में, जो कि फिर हर साल महंगाई को मद्देनजर रखते हुए एक मिनिमम वेज मुकर्रर करते हैं। जैसे अब सिंध ने और पंजाब ने 40,000 पर मंथ रखी है। लेकिन आईएलओ में अभी तक लिविंग वेज पे कोई भी कन्वेंशन नहीं आया। तो अप्रैल 2025 इसी साल में आईएलओ ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम तमाम मुल्कों को जिन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे सिग्नेटरीज हैं उनको हम वी विल वर्क ऑन लाइक मेकिंग देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज। और वो अब अप्रैल 25 में शुरू हुआ है। अभी हम नवंबर 25 में बैठे हैं, तो 5 महीने हुए आईएलओ ने शुरू किया है कि हम हुकूमतों को सिखाएंगे। और काश के सालिक साहब होते मिनिस्टर साहब, तो वो शायद इस पर रोशनी डाल दे। तो दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड आई होप वी आर प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर अगेन जैसे बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो है इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि वर्क फोर्स से आउट है, वो लेबर स्कोप में नहीं आता। तो असल इशू वहां पे होगा। और फिर लास्ट पर नॉट द लीस्ट जो मेन इशू है ना, हमारे पास लिविंग वेज आ भी जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर मसला होगा। क्योंकि मिनिमम वेज तो एग्जिस्ट करती है, 40,000 सिंध हुकूमत ने कहा है, पंजाब हुकूमत ने आपने देने हैं, लेकिन फिर भी ना वो जो हमारी गली में गार्ड है, मैं उससे पूछता हूँ कितने मिलते हैं, वो कहता है 32,000। मतलब कि उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन एक नेक्स्ट चैलेंज होगा। हाँ, अच्छा वाला है, वरना 25,000 30,000 इस तरह का होता है। तो और जो जो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी न्यू एंड इट इज इमर्जिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, और आईएलओ इज वर्किंग ऑन इट। हम जो है जर्मनी की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है फ्रेडरिक ईबर्ट स्टिफ्टिंग FES पाकिस्तान। तो हमने इस पे काम शुरू किया हुआ है। वी आर द ग्लोबल पार्टनर ऑफ आईएलओ, ग्लोबल सोशल पार्टनर। और फिर हम पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान लेबर एकेडमी बनाई है। तो उस पाकिस्तान लेबर एकेडमी में हम कुछ तहकीक का काम, रिसर्च का काम इस पे भी चल रहा है। और हमारी जो एंगेजमेंट है मैम विद द पार्लियामेंट, विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, विद द लेबर डिपार्टमेंट्स, विद द ट्रेड यूनियंस अक्रॉस द होल कंट्री, तो उस पे हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं। और लेबर एकेडमी जो है, उस पाकिस्तान लेबर एकेडमी में हम जो यंग वर्कर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेकिन साथ साथ में एक मॉड्यूल हमारा है ये मिनिमम वेज और फिर उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन। तो उसमें हम उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चीजें हैं। थैंक यू। We have Sure. Sir, my name is Ifra Ismail and I'm an economics student. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये बात करते हैं कि लिविंग वेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत है, और जो राइजिंग प्राइसेस हैं उसके लिए बहुत क्रूशल है कि लिविंग वेज दी जाए। और फिर हम साथ ही ये कहते हैं कि जब लिविंग वेज देते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन होती है। तो ये तो एक एंडलेस लूप है और ये तो इसी तरह परपिचुएट करता रहेगा। तो इस इशू को कैसे टैकल करते हैं आप? अच्छा, मेरा ये क्या, मैं थोड़ा सा शायद पूरे तरीके से एग्री ना करूं अली कमाल साहब से, मेरे बड़े हैं, उनसे डिसएग्री करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये इतना सिंपल नहीं है कि आप लिविंग वेज इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन के वन ऑफ द फैक्टर्स इज परचेजिंग पावर। सो उसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन वो जो मुझे लगता है कि डिमांड एग्रीगेशन होगी उसकी वजह से आपका ओवरऑल प्राइसेस भी कम होंगी। तो वो जो फैक्टर आई थिंक मार्केट फैक्टर्स हैं, वो खुद मार्केट उसको डिटरमिन करेगी कि क्या है, और उन्हीं फैक्टर्स की बेस पे लिविंग वेज रिवाइज होती जाएगी।
सो ये एक ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं कंडीशनिंग मैकेनिज्म है जो खुद कंडीशन होता जाएगा साथ साथ। सो वो एक फैक्टर को लेके आप कहेंगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो और तो खाली लिविंग वेज से इन्फ्लेशन कम भी नहीं होगी। तो वो आई थिंक उसका मतलब देयर इज अ बिगर स्टोरी टू इट। वो पूरा एक इकोनोमेट्रिक मॉडल जब बनाएंगे तो आई थिंक फिर देखा जा सकता है कि इसके क्या फैक्टर्स। हेलो, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। अगर यहाँ पे मिनिस्टर साहब होते तो वो अच्छे से बता सकते थे। यहाँ पर जो है ना वो लेबर इंस्पेक्शन की बात हुई है या फिर इवन थर्ड पार्टी की बात हुई है। वी हैव सीन हमारे यहाँ पे कितने कॉम्प्रोमाइज होते हैं ये लोग। बीइंग वेरी सब्जेक्टिव, यहाँ पे भी लिविंग वेज की बात हुई है तो यहाँ पर तो इवन इन इस्लामाबाद जो है वो मिनिमम वेजेस जो है ना वो पे नहीं किए जाते हैं। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, देखा है कि और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहाँ के सीईओ ने बोली कि हायर मजबूर लोग ताकि वो कम वेजेस में मान जाएं। सो 20,000 में या 18,000 में इस्लामाबाद में गुजारा करना तो मतलब ना होने के बराबर बात है। और अगर आप गलती से इमरजेंसी में छुट्टी कर लें तो इट्स लाइक आपके 2,000 तो वो वैसे ही काट लेते हैं। तो ये जो लेबर इंस्पेक्शन है और मतलब गवर्नमेंट भेजती भी है, आप उन पे पैसे लगा रहे हैं बट वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि कंपनी उनको पे कर देती है। तो इस सब सिचुएशन से जो डील करने का उन्होंने कहा कि एक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना चाहिए। तो अभी तक ये शायद आगे ये सजेशन गया नहीं है और इन नियर फ्यूचर भी थोड़ा मुश्किल ही है। तो मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी आपसे। इसमें मैंने जिस तरह आपको बात की, मेरे ख्याल से स्टेक अप्रोच नहीं चलती। वो सिर्फ लेबर के केस में नहीं, बहुत सारे और केसेस हैं। हमारा फॉर एग्जांपल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो बॉडी है PSQC है, वो इसी वजह से कोई भी इंटरनेशनल बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं करती, इन्हीं वजूहत की वजह से। तो उसके बजाय अगर आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर लेके आए तो बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं जो आपको सर्टिफिकेट देंगी। वो सर्टिफिकेट आप जमा कराएं, उसकी बेस पे लेट से मुझे अगर टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है और वो टैक्स इंसेंटिव ज्यादा है देन व्हाट आई एम पेइंग, तो आई थिंक किसी को मसला नहीं होगा। तो इस तरह का एक बिजनेस केस बनाने की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में कवानीन बनते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हद तक होती है और वो चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन इसका एक तोड़ जो है आलमी दुनिया ने निकाल लिया है। वो आलमी दुनिया ने ऐसा तोड़ निकाल लिया है कि हमारे पास एक स्कीम है जिसका नाम है GSP+। अब वो GSP+ स्कीम क्या कहती है कि जी 2014 से लेके 2024 तक के पाकिस्तान जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन के ममालिक में, तो उन पे टैरिफ जो है वो माफ होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान ने $100 बिलियन जो है उससे बचाए थे पिछले कुछ अरसे में। कि आप जैसे कहते हैं ना कि मैं फोन ला रही हूँ आईफोन का, तो यहाँ पे जी PTA टैक्स भी देना है, फला फला देना है। तो वो यूरोप में जब जो भी यहाँ से चीज जाएगी, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे वो केमिकल इक्विपमेंट्स हो, उस पर टैक्स नहीं है। उसके बदले में आलमी दुनिया ने क्या कहा, उनका उसके बदले में आपको ये 24 ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स के कन्वेंशन है, उसमें से 8 कन्वेंशन ILO के कोर कन्वेंशन लेबर के हैं, ये आपने इंप्लीमेंट करवाने हैं। अगर ये इंप्लीमेंट करवाएंगे तो आप पे टैक्सेस माफ। तो जब 10 साल के बाद, ये पिछले साल 25 अभी इसी साल जब उसका रिव्यू चल रहा है, तो उनको टेम्पररी तो एक्सटेंशन मिली है, लेकिन उसमें कुछ और लेबर राइट्स आलमी दुनिया ऐड कर रही है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके साथ आप पे टैरिफ ड्यूटी बढ़ा देंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो आप बता रही हैं कि मिनिमम वेज नहीं मिल रही, तो ये रिपोर्ट हो रहा है वहां पे। अब जब रिपोर्ट हो रहा है तो अब गवर्नमेंट के ऊपर आलमी दुनिया, जो यूरोपियन यूनियन है, स्पेशली जर्मनी है, उन्होंने ये दबाव डाला है कि जी अगर आप हमारे साथ, यूरोप के साथ कारोबार करना चाहते हैं तो अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने प्लांट लेवल तक लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको मिनिमम वेज दें, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर कराएं और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर काम करें। तो ये तमाम तर चीजें आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि इस तरीके से हो रही हैं कि उनको जो है फोर्स किया जा रहा है। जहां तक मॉनिटरिंग वाला मैकेनिज्म है, तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये है कि कराची की आबादी 2 करोड़ है ऑलमोस्ट, और उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं एज ए लेबर इंस्पेक्टर्स। और वो 500 लेबर इंस्पेक्टर सिर्फ कराची नहीं लेकिन पूरा सिंध कवर करते हैं, हैदराबाद भी कवर करते हैं, तो वो कम है। तो इस तरीके से इस्लामाबाद हो या जहां जहां इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे लेबर इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि लेबर इंस्पेक्शन को इंश्योर करवाया जाए। और फिर साथ में इस तरीके की ज्वाइंट या ट्राईपार्टाइट कमेटीज बनाई जाए, जैसे मैंने जिक्र किया था डिस्ट्रिक्ट विजिलेंट कमेटीज। इस तरह से इस्लामाबाद लेबर विजिलेंट कमेटी बनाई जाए जो कि इस्लामाबाद में इंश्योर कराए कि जी यहाँ पे मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। थैंक यू।
थैंक यू, Thank बट you. वो लेबर इंस्पेक्टर भी ऑनेस्ट होना चाहिए। आजकल तो एवरीवेयर दे टेक मनी और गुड रिपोर्ट दे देते, चाहे वो ऑडिटर हो कि लेबर इंस्पेक्शन हो कि whoever it is. So unless we are not honest to ourselves, to our country, to our province, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, no matter what we say. Now, अब लास्ट क्वेश्चन कहना है आसाद साहब, आपने बड़ा डिफेंड किया, तो आई वुड लाइक टू से कि दिल से आप मानते हैं कि लिविंग वेजेस ठीक है और कोई जाती गरीबों के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि आपने बड़ा प्रोटेक्ट किया, तो आई वुड लाइक टू हियर द लास्ट फ्रॉम यू कि आर यू सेटिस्फाइड, which I know heart to heart you are not. Yes. मगर still I would like to ask. नहीं मैम, बिल्कुल भी I'm not satisfied, but बड़ा strong case है for living wage. वो मैं बताना चाह रहा था। अगर आपको लगा हो कि मैं उस चीज को डिफेंड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरा वैल्यू चेन पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि यूनिलीवर अपने एम्प्लॉयज को दे, उनको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे, ऑटोमेटिकली ये फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उसका। We appreciate our moderator. We appreciate the way you took us around और जिस तरह आपने सब कुछ किया. We are happy with you, and of course your presentation, Ahad, and your presentation from Leah Abdullah and Liverpool. We are so grateful to you all. Good presentation, and we learned a lot, and we know where we stand. Everybody of us know where we stand in things. with this, we will conclude this roundtable session, and thank you, the audience, the esteemed panelists, for joining us this session. Thank you, everyone. Thank you.